Namaskar and welcome to Sansad TV. I'm Rajiv Kumar Singh and you are watching House Highlights. The program encapsulates the day's proceedings of both the Houses of Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Before we move into the details of the proceedings, let us take a quick look at the headlines. Rajya Sabha returns the bill related to increasing excise duty on tobacco products after discussion. Finance Minister Nirmala Sitharaman replies to the debate in the upper house. The bill provides for maintaining the existing tax structure even after the end of the GST compensation cess on tobacco products. Discussion held in the Lok Sabha on the Health Security Say National Security Cess Bill 2025. The bill proposes a cess on pan masala and gutka. Finance Minister Nirmala Sitharaman states that the revenue collected will also be allocated to states through various schemes. It stresses cess collection not on any essential item. India's electric vehicle market is expected to reach rupees 20 lakh crore by 2030. Sales of electric vehicles have increased by more than 20%, says Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, responding to a question in the Lok Sabha. Highlights the rupees 2,000 crore allocated under PM E-Drive scheme. We now proceed to the highlights of Day 4 of the winter session in the Lok Sabha. Proceedings in the Lok Sabha commence with the question hour. On Thursdays, questions asked in the Lok Sabha cater to the ministries of Civil Aviation, Food Processing Industries, Housing and Urban Affairs, Jal Shakti, Micro, Small and Medium Enterprises, Petroleum and Natural Gas, Power, Road Transport and Highways, Tribal Affairs. On the fourth day of the winter session, Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari assured the House that there won't be any toll booths in the new NHAI toll routes constructed in the country. Gadkari was responding to a question on irregularities in NHAI project. Let us listen to what else did the minister say in his reply. मैं सम्मान्य सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अभी हमने नई टोल के लिए टोल नाके ही खत्म कर दिए हैं। केवल जी एंट्री रहेगी और नंबर प्लेट का फोटो लेंगे और फास्ट ट्रैक होगा और डायरेक्ट बैंक अकाउंट से टोल के उतने पैसे ही जहां से एंट्री की वहां से वही तो सर वही आप मेरी बात सुनिए। वैसे मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा और सम्मान्य अध्यक्ष जी आप भी मुझे संरक्षण दीजिए। 10 लाख करोड़ के काम चालू है, 4,500 प्रोजेक्ट और प्रश्न केवल एक धुले से नासिक के बीच का है। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी तो दे नहीं सकता, पर आप एक काम करिए कि मेरे क्वेश्चन आवर के दिन समाप्त होने के बाद सब अधिकारी यहाँ आते हैं, सब एमपी आते हैं, तो आप आज भी आ सकते हो। मैं आपके सामने बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और अब ये टोल से समाप्ति हो जाएगी और इसके बाद ये कोई टोल रोकने वाले लोग नहीं रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा और ये सिस्टम में पहले 10 काम अब हमने अवार्ड कर दिए हैं। इसके बाद आगे चलकर ये 1 साल के अंदर लगभग हम पूरी तरह इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टोल पे जाएंगे। In response to a question on rural drinking water supply scheme, Jal Shakti Minister C.R. Patil assured the House that the Prime Minister has issued strict directions to eliminate any concerns regarding poor quality or gaps in implementation. कई जगह से, कई राज्यों से, कई एमपीओ से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार-बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। पानी देना ही पड़ेगा, पाइप बिछाकर या सिर्फ नल डाल के, फोटो डाल के वो अगर छोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके बताऊं कि अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों के ऊपर कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एक राजस्थान के मंत्री तो कल तक वो जेल में थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है, किसी को चार्जशीट दिया गया है। हम लोग स्कीम के द्वारा एक स्कीम बनाकर स्कीम के द्वारा ही उनको पैसा देना चाहते हैं
और जो अभी तक जो पैसा उनको दिया गया है उसका वो हिसाब भी जमा करे, उसका वेरिफिकेशन भी दे। और जब तक वो नहीं देंगे उसको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है, और उसी लिए हमने कैबिनेट से अभी तो मंजूरी भी मांगी नहीं है। जब तक ये हो जाएगा, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा है, सभी एमपीओ को तो हमने अलग से बुलाकर भी कहा था कि आपकी जो भी कंप्लेन है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम को चेक करने के लिए भेजा। उसके अंदर जो गलतियां या कमियां पाई गई उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए हमने हर सीएस को और सीएम को भी पत्र द्वारा बताया गया है। और जैसे भी ये पूर्तता होगी, हमें कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो पैसा तो जरूर मिलेगा, और ये स्कीम पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल तैयार है। मगर कोई भी गलती या कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं चलाएंगे। बात पहले से भी स्पष्ट की थी और अभी भी इस बात के ऊपर हम स्पष्ट है कि कभी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने या अधिकारी या कर्मचारी ने गलत किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिले हैं और उसके ऊपर हम काम करेंगे। Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari also responded to a question on the growth, safety and regulation of electric vehicles. Replying to a question raised by BJP member PC Mohan, the minister shared the latest data related to the registration and sales of electric vehicles in the country. In his response, Mr. Gadkari also referred to the futuristic developments expected in the field of hydrogen as fuel. Presently, 57 lakhs EVs registered in India. EV sales rates was faster than IC engines in 2024 and 2025. EV car increased by 20.8% and petrol and diesel by 4.2%. Two-wheeler EVs increased by 33% and petrol and diesel by 14%. There are three-wheelers EVs by 18% and petrol and diesel by 6%. Sir, in Karnataka, the EV growth is 16.6% and Bengaluru, it is 9.9%. Indian EV market potential is of 20 lakh crores by 2030, with rupees 1 crore annual sales of vehicle, creating 5 crore new jobs by 2030. 400 plus startups in electric two-wheelers sale increased by 21% since 2024. The lithium is very important. I remember when we had taken a decision for electric vehicle, the cost of the lithium-ion battery was $150 per kilowatt per hour. But now it is presently coming to $55 per kilowatt per hour. This is really a good indication. At the same time, there is a good news for our country that in Jammu and Kashmir, the 6 million tons, the lithium reserves are there, which is of the 6% of the world. The mining ministry is working on that for the futuristic development of our country. This is very important. And at the same time, we are already having a lot of research on the battery chemistry regarding the lithium ion, sodium ion, zinc ion, and aluminum ion. I am very much confident this is the future. But at the same time, the futuristic fuel is the hydrogen. Honorable Petroleum Minister is here. And I have also got the car, which is on hydrogen. And the car is from the Toyota. It's just like Mercedes, giving the comforts of that level. And the name of the car is Mirai. The Mirai Japanese words mean the future. And already our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission. And that is to be the future. So today, presently, we are the importer of the energy, but I am confident that under the leadership of our Prime Minister, in Atmanirbhar Bharat, we will be the exporter of the energy to the whole world. And for that reason, our government is giving highest priority for development of alternative fuel and biofuel. Members from different political parties raised issues related to their region and constituencies in the zero hour. Some of the matters of public importance concerned drug menace in Punjab and rising consumption of ultra-processed food. सर, मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ने बोला है कि पंजाब में ड्रग यूजर्स से ज्यादा ड्रग डीलर पेडलर्स हैं जो नशा बेचते हैं। और सर, यही एनसीआरबी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि पंजाब में देश में सबसे ज्यादा ड्रग से डेथ पंजाब में हो रहे हैं और सबसे ज्यादा स्मगलिंग भी ड्रग्स की पंजाब में ही हो रही है।
देश में सबसे ज्यादा 1150 किलो पिछले साल पकड़ा गया। यहां तक कि हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी दी है कि पंजाब की होम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और आम आदमी सरकार से उन्होंने जवाब मांगा कि इसके खिलाफ आप कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह सर कि जहां पे लोग दुखी होके गांव के दीवारों में लिख रहे हैं कि नशा यहाँ पे चिट्टा यहाँ पे बिकता है, तो सरकार उनको पकड़ने की बजाय पुलिस को भेज के उससे काला करके उसको मिटवा रही है। और सर 2 सेकंड बहुत जरूरी बात है। और यहाँ तक नशा सर लोग अपने छोटे बच्चों को बेच रहे हैं और मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और बाकी जेलों में से वीडियो वायरल हो रहे जैसे नशा बेचा जा रहा है। और 43,000 कॉल्स एक ही जेल के एक स्मगलर ने। तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आधा पंजाब बीएसएफ के अंडर है। बीएसएफ कहते हैं हर दूसरे दिन नशे पकड़े जा रहे हैं और ये बीएसएफ को सर्च और सीज, वो हमारी सरकार जहां बिल्कुल फेल हो गई है नशे के विरोध लड़ने के लिए, तो क्या केंद्र सरकार ये नशे रोक के लोगों की और बच्चों की जानों बचाने के लिए कुछ करेंगे कि नहीं? आज आपके माध्यम से मैं सरकार की ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से, सालों से देश में अल्ट्रा प्रोसेसिंग फूड का कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। विशेष रूप में जो इंस्टेंट नूडल्स होता है, स्वीट एंड बीवरेजेस होता है, सोडाज होता है, बच्चों बहुत ज्यादा पी रहे हैं एंड दिस इज रिजल्टिंग इन अ हेल्थ एपिडेमिक। ओबेसिटी ज्यादा हो रहा है देश में, टाइप 2 डायबिटीज हो, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो, ये बढ़ रहा है। और नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में 2025 में भी रिपोर्टेड है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजम्पशन के वजह से ओबेसिटी बढ़ रहा है। मेरा सरकार से ये मांग है, पहला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का डेफिनेशन करना है, दूसरा फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग करना है, कई सारे देशों में करके उसका कंजम्पशन बहुत कम हो चुका है, और तीसरा इस पे टैक्स ज्यादा करके एडवर्टाइजिंग बच्चों के लिए बैन करने का काम हमें करना है, देश के हेल्थ को बचाना है। धन्यवाद अध्यक्ष। In legislative business, the House took up discussion on the Health Security Say National Security Cess Bill 2025. After moving the bill for consideration and passing, Finance Minister Nirmala Sitharaman highlighted its significance. In her introductory remarks, she clarified that the proposed cess would apply to demerit goods such as pan masala and gutka and not on any essential commodities. The purpose of this bill, madam, is to create a dedicated, predictable source of resource for 2 domains of national importance. So the resource stream that we want to get by introduction of this bill and by passing of this bill, when it becomes an act, we expect a predictable resource stream for 2 domains of national importance. One is the health security. Given the significant health burden generally for all governments, both center and state, that arise out of consumption of demerit goods like pan masala. And the second domain pertains to national security. National security requires sustained investment, madam, to keep pace with evolving security needs. So, this is a cess, and it is placed not on any essential commodity. That has to be very clear from the beginning. The purpose of this cess is, of course, to levy a cess, but on a demerit good. It is not on essential commodities. And demerit goods which are associated with significant health risks. And therefore we wish to impose such costs so that it is a deterrent, so people tend not to use it. The Health Security Say National Security Cess Bill 2025 aims to boost funding for health and national security by levying a cess on machinery and processes involved in the production of pan masala. The bill saw participation from both the Treasury and the opposition benches, while the ruling side backed the bill
opposition members highlighted specific issues. Here are some key excerpts from the debate. देश के लिए, सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता उसके स्वास्थ्य की होती है, उस देश के इंसानों की। और दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता कि उस देश में रहने वाले लोगों की सीमाओं की सुरक्षा हो या उस देश की नेशनल सिक्योरिटी हो। मुझे लगता है किसी देश की प्राथमिकता केवल दो सर्वोच्च हो सकती है, तो हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। और मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि पहली बार हेल्थ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी दोनों का समन्वय एक विधेयक में करके लाई है और इस बात की प्रतिबद्धता कर रही है कि हम जो ये सेस लगाने जा रहे हैं डिमेरिट गुड्स पे, उस डिमेरिट गुड्स का एक एक पाई हम किसी और चीज नहीं खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च करेंगे, डेवलपमेंट पे, वो भी जरूरी है। आज हमारी ग्रोथ रेट है, जब कल इसी सदन में हमारी तरफ से कहा जा रहा था 8.2, तो हमारी सुप्रिया बहन बैठी है, तो आईएमएफ का कमेंट भी, कोड भी पढ़ ले कि आज भी आईएमएफ ने कहा अपार्ट फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और सबसे अच्छा है। We will support any such thing if you want to increase taxes on any good which is not good for society at large. We will support the government. GST अच्छा बिल आप लाए, हम आपके साथ खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम आपके साथ खड़े रहे। आप देश के लिए जो भी अच्छा करेंगे, हम पूरी ताकत से, हमारी राजनीति जो भी डिफरेंसेस है छोड़ के, हम आपके साथ देश के हित के लिए खड़े रहेंगे। और ये बिल अगर देश के हित के लिए है तो मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि सेस क्यों, और आपको अगर डबल करना हो ट्रिपल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाएंगे? हाउ कैन यू डू देन? व्हाट इज द वैल्यू एंड द सैंटिटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी? टुमारो यू आर गोइंग टू डाउनसाइज पार्लियामेंट। Let us now take a look at the key highlights from the fourth day of the winter session in the Rajya Sabha. The Rajya Sabha functioned smoothly on Thursday. The proceedings began with the tabling of papers related to various ministries and reports of parliamentary committees. The papers tabled on Thursday included those from the Ministry of Culture, Ministry of Science and Technology, Ministry of Personnel, Public Grievances and the Pensions, Department of Atomic Energy, Ministry of Communications, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In addition, the reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice were tabled. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution were also laid before the House. During the proceedings on Thursday, Chairman C.P. Radhakrishnan clarified that Rule 267 of the Rajya Sabha is not equivalent to the adjournment motion in the Lok Sabha, which is provided under Article 75(3) of the Constitution. For the Rajya Sabha, no such constitutional or procedural provision exists. The chairman emphasizes that Rule 267 can only be applied to matters that are part of the listed business of the day, and noted that its use has been permitted only in exceptionally rare circumstances. Honorable members, I have received 2 notices under Rule 267 on 2 different issues. Honorable members, on a demand made by some members, I had observed yesterday in the House that I will review the position with regard to the notices being submitted under Rule 267 of the Rules of Procedures and give my ruling. Honorable members, I have observed that the notices under Rule 267 are being submitted almost daily to seek suspension of the listed business and to demand discussions on issues as deemed fit by the individual members. Regrettably, this is not the purpose of the Rule 267. Therefore, it is necessary to clarify its mandate. At the outset, members may appreciate that the Rule 267 in the Rajya Sabha is not equivalent to an adjournment motion in the Lok Sabha. The adjournment motion is exclusive to Lok Sabha due to application of Article 753 of our Constitution. There is no constitutional or procedural provision
authorizing Rajya Sabha members to give any adjournment notice in any manner. Under Rule 267, a rule may be suspended only for a matter related to the business already listed for that day. A notice must specify the rule sought to suspend and include a properly drafted motion. Any notice concerning a matter outside the list of business is invalid. The present form of Rule 267 results from an amendment adopted by this House in the year 2000. The Rules Committee in the year 2000 was presided over by the then Chairman, Rajya Sabha, Sri Krishnakantji, and consisted of eminent members like Dr. Manmohan Singh, Sri Pranab Mukherjee, Arun Chori, M. Venkaiah Naidu, Suraj Kausal, Fali S. Nariman, etc. The committee observed that the rule was being used to seek discussions on matters not listed or not yet admitted. The committee therefore recommended restricting the Rule 267 strictly to subjects related to the list of business and added to proviso preventing its use where a rule already contains a suspension mechanism. The House approved these recommendations on 15th May 2000. Honourable members, it is pertinent to note that between 1988 to 2000, discussions under Rule 267 were held only 3 times, and on just 2 of those occasions was the rule invoked strictly as prescribed. Further, from the 2000 amendment to the present, no discussions have taken place under Rule 267. However, on 8 occasions, discussions were held only after consensus in the House. Honourable members can see that in almost 4 decades, this device of Rule 267 has been invoked in the House on rarest of rare occasions. After the amendment, Rule 267 enables suspensions of a rule only to take up matters already listed for the day and not to introduce any unrelated subjects. A valid notice under Rule 267 must specify the rule to the suspended, relate to an item in the day's list of business, provide the grounds for invoking Rule 267, not seeking suspension of business where a rule already allows suspension, contains a motion drawn in proper form. Only notices fulfilling all these conditions and receiving prior consent of the chairman may be taken up in the House. In view of my observation, clarification above, Rule 267 notices not meeting these requirements will not be taken into consideration. Any matter of urgent public importance can be raised by other parliamentary devices. Thus, the notices received under Rule 267 are not admitted. Following the chairman's ruling, leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, observed that unlike the Lok Sabha, the Rajya Sabha has no alternative to an adjournment motion. Therefore, the opposition is left with no option but to rely on Rule 267 notices to raise sensitive and important issues for discussion. Responding to the charge that the government avoids debate, Leader of the House, J.P. Nadda, asserted that the government has never shied away from discussion on any issue in the Rajya Sabha. Sir, I want to clarify only one thing, that the Leader of the Opposition said that the government is avoiding to have discussion. Government has not avoided any discussion. Whatever you have asked, we have always given the time, and we have discussed. Last session also you asked and we gave you the time and we had full-fledged discussion. So this impression should not go that the government avoids any discussion. We are ready to discuss on every topic, and here also in the all-party meeting you have decided to have discussion on Vande Mataram and the electoral reforms, and it is coming in the next week. Parliament has approved the Central Excise Amendment Bill 2025, which seeks to increase excise duties on tobacco and tobacco products.
The bill was debated for nearly 3.5 hours. Following Finance Minister Nirmala Sitharaman's reply, the Rajya Sabha adopted the motion to return the bill to the Lok Sabha without any amendments. The Lok Sabha had already passed the bill on Wednesday. Earlier, during the discussion, members of the Congress, along with several opposition parties, criticized the proposed amendments. They argued that the measure would not help achieve the objective of discouraging tobacco use, but would instead adversely affect the poor, women and tribal communities engaged in बीड़ी making. हम ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों लोगों के हेल्थ से संबंधित है, लाखों करोड़ों लोगों के लाइवलीहुड से संबंधित है और सरकार को भी इससे बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है. तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसपे आज तक किसी भी सरकार ने अपना विजन स्पष्ट और क्लियर नहीं किया है. इनफैक्ट मैं ये अगर किसी से पूछूं कि भाई आपका विजन क्या है, क्या टोबैको यूज होना चाहिए या पूरी तरीके से बैन होना चाहिए तो कैसे रेगुलेट होना चाहिए, किसी के पास एक कंस्ट्रक्टिव आंसर नहीं है. Later, Nirmala Sitharaman clarified that all the doubts and also stated that the central government is very vigilant toward health of the poor people and tribes. Health and wellness have been a key focus of our government. Prime Minister Narendra Modi has been very keen that in the last 11 years, I can read out the amount being spent on health. The last year of UPA government, 2013-14, 33,278 crores have been spent for health ministry's budget allocation. Whereas 25-26 this year, the BE, I'm comparing the BE with BE, 99,858 crores have been allotted, 3 times more. So, other than that, between 2014 and 2021-22, 14-15 and 21-22, government health expenditure as a percentage of GDP rose from 1.13% to 1.84%. Government health and expenditure is a share of overall government spending also increased from 3.94 to 6.12%. Between 2014 and 22, per capita health spending tripled from 1,108 rupees to 3,169 rupees. This is per capita, sir. Other than that, of course, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana gives protection for nearly 55 crore beneficiaries, 9 crore plus, over 9 crore hospital admissions have been entertained under that, resulting in 1.3 lakh crore or even slightly more worth of free treatments. So healthcare has taken a good priority in this government. Later, the bill was approved by the upper house. That is all we have in this episode of House Highlights. Keep watching Sansad TV for all the latest on the proceedings in the Parliament. Thanks for watching. Goodbye.